Hello friends and welcome to this new series which is called as Image का सवाल. Image का सवाल क्यों? क्योंकि हमारे examinations में there are so many questions that are image based questions. Sometimes the image comes itself in the question and nothing else is given around the image, and we may need to make the diagnosis, the mechanism of what has happened in the image. We need to make a choice around it, or maybe the event that is described in the image, we need to choose the correct option. And sometimes image itself is a part of a lengthy question. A question is given, and image also shows one of the phenomena that may be a part of the question. Okay, so it comes both ways, and thus it is very important कि हम अपनी पढ़ाई images के around भी करें. उसके लिए this series will help you to prepare some of the image based questions of forensic medicine, right? तो आज देखते हैं कि हमारी आज की इमेज कौन सी है. आज की इमेज हमारी है ये. So if we see this image, if we analyze this image, what do we see? We see that this image describes what very plain and simple is called as a ligature mark on the neck. We can see a ligature mark on the neck, and this ligature mark can be seen in two situations. One, hanging, and number two, ligature strangulation. Okay, so whenever a question comes to us, the examiner wants us to differentiate whether it is hanging or strangulation based upon the appearance of the ligature mark. So let's see क्या important चीज़ें हमें देखनी चाहिए so that we are able to say whether it is a ligature mark of hanging or ligature strangulation on the neck. Okay, let's see that. So we need to see five important areas or five important traits. The first one is टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स आपको वो फील करना पड़ेगा नेक पे, डेड बॉडी पे, कि अगर हम उस लाइगेचर मार्क को फील करें तो हमें कैसी फील होती है. हैंगिंग में वी विल हैव ड्राई, हार्ड एंड पार्चमेंटाइज्ड अपीयरेंस. ड्राई होगा, हार्ड होगा और एक पार्चमेंटाइज्ड अपीयरेंस दिखाई देगी. whereas in strangulation it is moist, just like skin, right? Second is placement on the neck. ये ligature mark neck की किस जगह पे है? Hanging में we see it in the upper one third of neck, जिसको हम above the level of thyroid cartilage भी कहते हैं. And in cases of strangulation it will be in the middle one third ऑफ नेक, जिसको हम एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज भी कहते हैं, यानी कि थायराइड कार्टिलेज के ऊपर. और हैंगिंग थायराइड कार्टिलेज से ऊपर की तरफ, यानी अबव द थायराइड कार्टिलेज. ओके. थर्ड इज ओरिएंटेशन. हैंगिंग का लाइगेचर मार्क is generally obliquely oriented on the neck, so its orientation is oblique, whereas strangulation it is horizontal. फोर्थ इज एनसर्कलमेंट अराउंड द नेक, कि हमें नेक के चारों तरफ कैसा दिखता है लाइगेचर मार्क. हैंगिंग के केस में हमें दिखेगा इनकम्प्लीट लाइगेचर मार्क. इनकम्प्लीट. स्ट्रैंगुलेशन में इट विल बी complete. Complete means it will be seen all around the neck,
चारों तरफ से लगभग हमें एक लाइगेचर मार्क नेक पे दिखेगा, आगे भी, साइड में भी, पीछे भी। वेयरएज़ हैंगिंग में इनकम्प्लीट दिखेगा, या तो सेंटर और लेफ्ट की तरफ होगा, या सेंटर और राइट की तरफ होगा, या फ्रंट में होगा और साइड्स और बैक में नहीं होगा। सो मोर और लेस हैंगिंग के केसेस में इस तरीके का इनकम्प्लीट लाइगेचर मार्क दिखाई देता है। और लास्टली जब हम इस लाइगेचर मार्क को डिसेक्ट करेंगे तो हमें अंडरनीथ सबक्यूटेनियस टिश्यू कैसा दिखाई देगा। इन केसेस ऑफ हैंगिंग द टिश्यू इज वाइट एंड ग्लिस्टनिंग। द टिश्यू इज वाइट एंड glistening, whereas strangulation के केसेस में it will have hemorrhagic patches. राइट, तो हैंगिंग में हमें हेमरेजिक पैचेस नहीं दिखाई देंगे, स्ट्रैंगुलेशन में हमें हेमरेजिक पैचेस दिखाई देंगे। ओके, सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इफ यू गो बैक टू दी ligature mark which was shown to us in the photograph, what do you see? देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, that this is a ligature mark which is probably above the level of thyroid cartilage, right? तो thyroid cartilage से ऊपर की तरफ है, you can see it kind of goes oblique towards the right ear। अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, इसका डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स की तरफ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो प्रॉबेबली हमें कुछ इस तरीके से दिखता नेक पे, एक तो लेवल इसका नीचे होता and it would have been like this, but it is not horizontal. So we can see a ligature mark which is oblique in the upper half of the neck, right? We cannot dissect this ligature mark now. We cannot see at the back of this ligature mark now to see whether it is incomplete or not. But if we follow the ligature mark on the left side of the neck, we can see it is almost ending here, right? वहां पर टेपर कर रहा है, शायद उसके बाद नहीं होगा, विच मीन्स प्रॉबेबली वुड बी इनकम्प्लीट ऑल्सो। वी डू नॉट हैव द फोटोग्राफ ऑफ द बैक ऑफ द नेक अवेलेबल। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस इमेज में जो लाइगेचर मार्क है वो एक हैंगिंग का लाइगेचर मार्क दिखाया गया है। ऑब्वियसली अगर इस तरीके की कोई इमेज एग्जामिनेशन में आती है तो उसके साथ में एक रिटन क्वेश्चन भी अवेलेबल होगा जहां पर अपार्ट फ्रॉम द फोटोग्राफ लाइगेचर मार्क की कुछ और प्रॉपर्टीज भी मेंशन होगी, सो दैट चूजिंग whether it is hanging or ligature strangulations become appropriately easy, right? बट वो तभी हो पाएगा अगर हम ये important 5 traits याद रखेंगे: टेक्सचर, प्लेस ऑन नेक, ओरिएंटेशन, एनसर्कलमेंट, सबक्यूटेनियस टिश्यू किस तरीके से दिखाई देता है, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं एंड वी नीड टू अटेम्प्ट देम विद फुल कॉन्फिडेंस। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आई विल कीप ऑन मीटिंग यू टू डिस्क्राइब more and more forensic images. Stay tuned on this channel.